Namaskar, I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to our live and interactive online training session on cyber hygiene. Well, this particular training session is organized by CIET, that is Central Institute of Educational Technology, NCERT, New Delhi. You are watching this live and interactive online training session on our eVidya channels from 6 to 12 and also on our YouTube channel NCERT Official. Well, today is day 5 of this particular training session and we have been conducting this session since 1st of January or Monday, and it's a 5-day training session where each day 1 hour between 4 and 5 p.m. is dedicated to this particular training program. This training session is open to all. If you are a student, teacher, or you're just a viewer, a layman, this particular training session is extremely relevant and important because during this session, we have so far learned about cyber hygienes. We have covered 5 different themes. Of course, today is day 5, so 5th theme would be covered today. But previously, on all 4 days, we covered 4 different themes with different resource persons on cyber hygiene. That's the umbrella concept of the training. So let me tell you about the previous sessions a bit. Well, I've already told you it's a 5-day, 5-hour training program, online training program. On day 1, the theme was understanding the basics of cyber hygiene. On day 2, we discussed how to safeguard the virtual space. Day 3 was dedicated to safe socializing online. Day 4 was all about cyber hygiene for classrooms, best practices for teachers and students. Today is day 5 and the theme that we are going to discuss today is defending against digital threats, recognizing and avoiding cyber attacks. I'm sure you must be having a lot of questions on the same. You have understood a lot of things so far, but yes, going forward, there's still something very important, indispensable left to be learned, and today we will be learning the same. To have a discussion on today's theme, we are joined by our esteemed guest, Mr. Devinder Kumar. He is consultant from I4C MHA. So let me first of all welcome him. Welcome to the session, sir. Thank you, ma'am. So as I have already been introduced, I am Devinder. I'm retired Senior Technical Director from NIC. It is National Informatics Center. Right. And now I'm working as a consultant with I4C. I4C is the Indian Cybercrime Coordination Center under Ministry of Home Affairs. Thank you so much, sir, for introducing yourself. And before we actually start this discussion, let me tell my viewers that they can actually connect with you during this session. So viewers and students, if you want to speak to sir on the theme that we are going to cover today, if you have any doubts, any suggestions, any feedback, any queries, please feel free to connect with us. Take down our phone number, which is 8800440559. You can call us on this number, and if you want to send us your queries, suggestions or feedback through email, then we have an email ID for you, which is training.helpdesk@ciet.nic.in. Since this particular training is organized by CIET, we have a dedicated web page for the same. You can go through all the information regarding the training, and I'll be telling you about the quiz also, which will be opening shortly today. Yes, so I'll tell you all about the quiz, how to share your feedback, and a lot more by the end of the session. Since you are watching us live on our YouTube channel NCERT Official, you can also go to the live comment section or live chat box. You can type your question there, send in your feedback, your question, any doubt that you have. Because unless and until you pay attention, unless and until you ask questions, you won't be able to attempt the quiz today. And of course, if you want to score a certificate of participation, you need to score more than 70%. All this and much more right after this particular session. So let me tell you the theme of day 5 once again. It is defending against digital threats, recognizing and avoiding cyber attacks. So, sir, now I request you to kindly give us an insight of the things that we're going to learn today. We have learned so many important things so far. Of course, we need to keep ourselves safe.
There are privacy concerns, security threats. We need to safeguard that because we have to use virtual space anyhow. But how to do that wisely? Protecting ourselves, our interests of our family, community, the organization that we are working in is very, very important. So let's just try to understand, recognize these threats, and how to avoid them is something we are looking forward to, because prevention is always better than cure. So please. Thank you, ma'am. So let us start with the topic, defending against digital threats, recognizing and avoiding cyber threats. So what are these digital threats? Before we understand as what are the digital threats, ये threats है किसके against? जी. ये किससे किससे threats हैं, ये किसको नुकसान हो सकता है? So these threats are against digital assets. Then what are digital assets? So there are different type of digital assets, as this has been listed here. The digital assets may be the digital files, which include documents, media files, and it may be the financial assets, which includes cryptocurrencies or online banking and investment accounts. Under intellectual property, it may include the copyrighted material like digital books, music, video, and software, trademarks, and logos. And there are online accounts, under which category comes the social media accounts, email accounts, domain names, digital representation of website ownerships, etc. So under digital credential, usernames and passwords are there, digital certificates, that is SSL, and digital signatures are there. Under digital art and collectibles, NFTs, that is the non-fungible tokens representing digital arts may be there. So there may be digital collectibles, and personal data is very, very important asset. So under it, personal identification information may be there, which includes the name, address, phone number, etc. of a person. It includes the health records, business data is important digital assets, which includes the customer data and business documents, including the contracts, agreements, financial records, etc. Software and applications. Software licenses, mobile applications, etc. All these are digital assets. Others are the domain names, which include digital assets representing the website address that on the internet. E-books and digital publications are also digital assets. Online courses and educational content. Like on the YouTube, you may have seen many channels which provide online courses. So their content is a digital asset for them. So website content, which includes text, images, multimedia content hosted on website, etc. All this is the digital assets. And lastly, the cloud-based storage, which may be the, services like Dropbox, Google Drive, or Microsoft Drive, or even the nowadays we are using the servers or cloud-based servers. So all these come under the digital assets. So if there are any threats against these assets, then those are the digital threats. So what type of threats these are? So digital threats and digital threats and cyber attacks. So we can use these terms many times interchangeably. So in the image, I am showing you the some types of cyber attacks. So these attacks often happen against the digital assets. So some of the attacks I am enlisting here. I am give you a short introduction about these attacks, and I will take somewhat in detail about the ransomware and DDoS attack. Sure. So yeah, in just a short introduction about all of this, ransomware is a type of malicious software designed to block access to a computer system or a file until a sum of money
often in the form of cryptocurrency, is paid to the attacker. The term ransomware is derived from the fact that the attackers demand a ransom from the victim. So a man in the middle attack, in short, it is known as the MITM attack, is a form of a cyber attack where an unauthorized third party intercepts and potentially alters the communication between two parties without their knowledge or a consent. The attacker positions themselves between the communicating entities, allowing them to eavesdrop on or manipulate the exchanged information. So another attack is zero-day exploit. A zero-day exploit refers to a cyber attack that takes advantage of a previously unknown and unpatched vulnerability or a zero-day vulnerability in a software application, operating system, or a hardware device. The term zero-day refers to the fact that developers have 0 days of awareness or preparation to address and fix the vulnerability before it is exploited by the attackers. So another common attack is DNS tunneling. DNS, as all of you may be knowing about it, DNS means domain name system. So DNS tunneling is a technique used by the attackers to bypass network security measures and exfiltrate or infiltrate data by encoding it with DNS queries and responses. So DNS is primarily designed to translate human readable domain names into IP addresses, but DNS tunneling exploits the protocol for malicious purposes. So how it can be done? As we put a firewall in between the WAN and LAN. फायरवॉल लगा दिया तो जो भी ट्रैफिक आएगा, जो वैन से, जो इंटरनेट से जितना भी ट्रैफिक आएगा, दैट विल बी एग्जामिन्ड बाय द फायरवॉल एंड इट विल बी फिल्टर्ड. बट जो डीएनएस रिक्वेस्ट है, जो डीएनएस रिक्वेस्ट नेटवर्क से बाहर जा रहा है और बाहर से वापस रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर फायरवॉल कुछ नहीं करता है, क्योंकि दैट इज नॉट सपोज्ड टू डू एनीथिंग ऑन इट. तो डीएनएस अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो करता है. It directly it flows unrestricted from the firewall. So the fraudsters make use of this facility to introduce a payload in the network. So another attack can be attack is cryptojacking, also known as malicious cryptocurrency mining. So cryptocurrency mining is a cyber attack in which attackers use the computing resources of unsuspecting individuals or organizations to mine cryptocurrencies without their consent. So cryptocurrency mining involves solving complex mathematical problems to validate and add transactions to the blockchain, and miners are typically rewarded with newly created cryptocurrency coins. तो cryptocurrency जो mining कैसे होता है, इसमें there are very complex mathematical calculation, and for these calculation a high computing power is required. ठीक है. अब जो फ्रॉडस्टर है वो क्या करते हैं भाई, सब जो विक्टिम्स हैं उनके डेस्कटॉप्स में या उनके कंप्यूटर्स में जो क्रिप्टो करेंसी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, जो कि उसको पता नहीं लगता है. जो विक्टिम है उसको नहीं पता लगेगा इसके कंप्यूटर में क्या हुआ है. तो इस तरह से वो हजारों कंप्यूटर्स में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, तो उस पर्सन के लिए वो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग हो रही है. फ्री में बैठे, वो आराम से फ्री में बैठा हुआ है. जो विक्टिम है उसका इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, उसकी कंप्यूटिंग पावर यूज हो रही है, उसका कंप्यूटर यूज हो रहा है. सो दैट इज द क्रिप्टोजैकिंग. Another is cross-site scripting. It is a type of a security vulnerability commonly found in web applications. So it occurs when an attacker injects malicious scripts into web pages that are viewed by the other users. So social engineering attack मेरे ख्याल में मेरे को बताने का जरूरत नहीं होना चाहिए. Today is the 5th day and most of you कई सेशंस में ये कवर ऑलरेडी हो चुका होगा. Social engineering in short is a fraudster will create such a scenario that the victim will himself hand over his information to the
फ्रॉस्टर अपने आप ही दे देगा। वो इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करेंगे, चाहे वो मेल में हो या वेबसाइट पे जाके कैसे भी, इवन वॉइस कॉल से। DDoS attack is very important, which I have told that I will cover in detail. It is an DDoS attack is a type of a cyber attack in which multiple compromised computers or devices are used to flood a target system, services, or network with a high volume of data, overwhelming its resources and making it unavailable to the users. The goal of DDoS attack is to disrupt the normal functioning of the targeted system, causing downtime, service degradation, or rendering it entirely inaccessible. यानी किसी टारगेट पे इतना सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया कि जो उसके लेजिटिमेट यूजर्स हैं, दे विल नॉट बी एबल टू use that resource. So this is the type of a DDoS attack. Password attack, I think पीछे cover किया होगा, but I will, in short, I will also cover it. Password attack is a type of a cyber attack in which an unauthorized individual attempts to gain access to a system network or user account by exploiting weaknesses in password. In short, it is just the क्रैकिंग ऑफ पासवर्ड। किसी भी पासवर्ड को अगर क्रैक करता है कोई फ्रॉडस्टर, दैट इज नोन एज द पासवर्ड अटैक। फिशिंग अटैक अगेन पिछले 4 दिन में जरूर कवर हो चुका होगा। फिशिंग अटैक इज अ टाइप ऑफ ए अटैक इन विच अटैकर्स यूज डिसेप्टिव email messages or websites to trick individuals into divulging sensitive information such as username, password, credit card details, or other personal information and financial information. So phishing attack often leverage social engineering techniques to manipulate the target's emotion, curiosity, or fear to achieve the malicious goals. तो लास्ट वन इज मालवेयर अटैक। ये भी उम्मीद है कवर किया गया होगा। इन शॉर्ट मैं भी इसको कवर करूंगा। मालवेयर अटैक इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर कॉमनली नोन एज मालवेयर। तो मालवेयर अब तक आपको शायद पता लग चुका होगा भी मालवेयर होता क्या है। ठीक है, मालवेयर सब लोग अगर कभी पूछता हूँ भी मालवेयर क्या है तो कहते हैं वायरस है। ठीक है, खाली वायरस मालवेयर नहीं है। मालवेयर मीन्स एनी सॉफ्टवेयर, नॉट ओनली वायरस बट एनी सॉफ्टवेयर क्रिएटेड विद malicious intents. इसके malicious, any software which is malicious in nature is a malware. So malware is a software. So some aspects of cyber security, क्योंकि अगर डिजिटल थ्रेट्स हैं, डिजिटल असेट्स हैं, तो साइबर सिक्योरिटी को थोड़ा सा जानना भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज cyber security or its aspects? So the first aspect is the confidentiality. So these aspects mostly are related to the data, because data is in every digital asset, data is involved. So confidentiality is ensuring that sensitive data is accessible only to authorized individuals and protected from unauthorized disclosure. यानी जो जिसका डाटा है, जो ऑथोराइज है उस डाटा के लिए, वो ही उस डाटा को रीड कर पाए, मॉडिफाई कर पाए। ठीक है, उसके अलावा और कोई उसको नहीं व्यू भी नहीं कर पाए। तो इंटेग्रिटी मींस सेफगार्डिंग द एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ डाटा एंड सिस्टम्स बाय प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन और टेम्परिंग। अवेलेबिलिटी is ensuring that systems and resources are accessible and functional when needed and protected against DOS attacks or other disruptions. यानी डाटा, अगर किसी का डाटा है तो डाटा उसको जब उस डाटा की जरूरत है तब अवेलेबल होना चाहिए। सो दैट इज द अवेलेबिलिटी। ऑथेंटिकेशन इज वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर डिवाइसेस और सिस्टम्स टू grant appropriate access privileges and prevent unauthorized access. And authorization is granting and managing access privileges. जैसे किसी भी सिस्टम में, ऑर्गेनाइजेशंस में यूजर नेम है, पासवर्ड है, आप गूगल का ईमेल यूज करते हैं, वहां भी यूजर नेम पासवर्ड है। ठीक है, ऑल दिस कम्स अंडर द ऑथोराइजेशन।
Network security is protecting computer networks from unauthorized access, malware, and other threats through measures such as firewall, intrusion detection, prevention systems, and secure network configuration. Endpoint security, securing individual devices such as computer, laptops, mobile devices, and Internet of Things devices to prevent unauthorized access and protect against malware or other threats. So, in short, endpoint devices are भाई लास्ट में जो कंप्यूटर जिसपे जो यूजर बैठा हुआ है, जिसपे यूजर वर्क कर रहा है, तो जनरली दोज आर द एंड पॉइंट डिवाइसेस. So data protection is implementation measures to safeguard sensitive data through encryption, data backups, secure storage, and secure data handling practices. Incident response, establishing the processes and procedures to respond promptly and effectively to cyber security incidents, including identifying, containing, mitigation, and recovering from security breaches. तो इसका छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ. जैसे घर में ही है अभी, अक्सर कईयों के साथ ऐसा हुआ कि डेस्कटॉप पे हम वर्क करते हैं और डाटा खत्म हो जाता है. कुछ जो हार्ड डिस्क में फ्ला आया, पावर गई और डाटा खत्म हो गया. ठीक है, तो एकदम आप ब्लैंक हो जाएंगे भी अब करें क्या. वो ब्लैंक आप इसलिए हो गए क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं था भी ऐसा हो सकता है. अगर आपने ऐसा सोचा होता है, पहले से उसका अरेंजमेंट किया होता है, तो आपने बैकअप उसका लिया होता. ठीक है, ये तो बहुत छोटे लेवल पे हो गया, जो एक पर्सनल लेवल पे. लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी होता है, क्योंकि मैनी times many of the organizations are not well prepared to mitigate the threats of ransomware or the DDoS attacks. And the lastly, the educating users and employees about cyber security best practices, promoting a security conscious culture and helping them understand the potential risks and how to protect against them. मीन्स जो यूजर ट्रेनिंग है, अवेयरनेस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द डिजिटल थ्रेट्स. तो अगेन जो साइबर अटैक डिस्कस किया था, जितने इन शॉर्ट मैंने सभी कर लिया था. ये दीज 3 साइबर अटैक्स, दीज आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, more to individual, like these affects the organization, but these affects more as a individual को ज्यादा इफेक्ट करते हैं. तो क्या मालवेयर अटैक, सोशल इंजीनियरिंग एंड पासवर्ड. तो व्हाट इज मालवेयर अटैक? एक लैपटॉप है, उसमें जो डाटा है सेफ है, उसको कुछ नहीं हो सकता जब तक वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो कुछ नहीं होगा डाटा को. बट वंस इट गेट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इट बिकम्स वनरेबल. It becomes accessible to the whole of the world. पूरी दुनिया में से कोई भी जो ट्रैफिक है यहाँ तक आ सकता है. अगर ट्रैफिक आ सकता है and there are vulnerabilities in the windows, then any fraudster can inject the malware directly into this laptop. So this is the malware attack. Yeah, malware attack, there are other methods. Malware can come via email, it can come via websites and via mobile application. कई तरीके से आ सकता है. It can also come via social engineering. अगर कंप्यूटर इस कंप्यूटर में सभी सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वो अप्लाई कर रखे हैं अप टू डेट, तो उसमें मालवेयर अटैक नहीं होगा, जो डायरेक्टली नहीं हो पाएगा. ठीक है, देन इट कैन हैपन वाया सोशल इंजीनियरिंग. सोशल इंजीनियरिंग में ईमेल से आएगा वो, या कोई वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू आ सकता है. पासवर्ड अटैक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इट involves cracking the password. So these are the type of malware. The malware different type है, virus है, worm है, trojan horse, kilo. These are the important ones or the top 4. ठीक है, वायरस आप सब लोग जानते हो. मालवेयर मैंने अभी बताया था, एनी सॉफ्टवेयर क्रिएटेड विद मैलिशियस इंटेंट इज ए मालवेयर. सो वायरस इज ए मालवेयर. तो वायरस कई साल से, जब से हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तब से चला आ रहा है. So after that came the worms. What is the difference between these virus and worms? So virus is not self-replicating. अपने आप को replicate नहीं कर सकता वायरस.
and it cannot transmit itself from one computer to another. For that it needs the human intervention. ठीक है, पहले जैसे फ्लॉपी ड्राइव्स होता था या सीडीज होता था, आजकल पेन ड्राइव्स हैं, तो वायरस पेन ड्राइव में जाएगा, पेन ड्राइव जब दूसरे कंप्यूटर में जाके लगेगा तो वायरस ट्रांसफर हो जाएगा एक कंप्यूटर से दूसरे में. Unlike virus, worms is self-replicating, अपने आप replicate करता है, and it can transfer itself from one computer to another without any human intervention. Okay, which means it can transfer itself via network. नेटवर्क से ही ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला जाएगा. ट्रोजन हॉर्स प्रेजेंट्स इटसेल्फ एज ए यूजफुल यूटिलिटी. कोई भी यूजफुल यूटिलिटी आप कोई कई बार आप डाउनलोड करेंगे, यूटिलिटी आपको चाहिए होती है पीडीएफ टू वर्ड, यानी इट इज जस्ट एन एग्जांपल, पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर. आप कोई यूटिलिटी डाउनलोड कर लेंगे, फ्री का यूटिलिटी मिल जाएगा, बट दैट कैन बी ए ट्रोजन. वो काम तो कर देगा लेकिन उसमें मालवेयर है, वो आपका डाटा स्टील कर लेगा. Keylogger is a very small malware. If it is there in my computer or your computer, its function is to register the physical keystrokes. जो कीबोर्ड पे जो भी की प्रेसेस करेंगे वो सारा रिकॉर्ड कर लेगा और वो इंफॉर्मेशन फ्रॉस्टर को भेज देगा. इम्प्लीकेशन क्या होंगे? सपोज आई एम कैरिंग आउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आई विल की इन माई यूजर नेम, आई विल की इन माई पासवर्ड, I will key in my security question. So all these will get recorded by this keylogger and the file will go to the fraudster. Spyware, maybe any malware, if it gets installed in the computer, then it will steal your data. Adware comes via advertisements or pop-ups. Ransomware we will discuss. So these are different methods of password. If someone is keeping his password with a dictionary word, यानी password उसका dictionary word पे based है, then very easy to crack. There are automatic tools available. ऐसा नहीं है अभी कोई person आके कंप्यूटर पे बैठ के क्रैक करेगा. There are automatic tools available which can do it. Brute force means if the password is 5 or 7 character और different combination बना के उसको break कर लेगा. Keylogger I have already discussed. Shoulder surfing is a non-technical one. Suppose I am typing my password and someone is standing behind me, then he can observe that password. It happens in the ATM machines. कोई भी ज्यादा पर्सन पैसे निकलवाता है, 3 नंबर डालता है, तो दूसरा पर्सन बाहर या उसके साथ में ही खड़ा हुआ वो ऑब्जर्व कर लेता है, तो यहाँ जो पिन नंबर है वो कंप्रोमाइज हो गया. Rainbow table is used when there is a data breach. Data breach means कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के डाटाबेस में से जो यूजर इंफॉर्मेशन है, which includes the यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो चोरी हो गया, स्टील हो गया है, तो उस पूरे डाटा को ब्रेक करने के लिए रेनबो टेबल का यूज होता है. तो वाईफाई, आजकल वाईफाई सब हमारे घर में वाईफाई है, ऑफिस में वाईफाई है, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं वहां वाईफाई है, एयरपोर्ट पे है, किसी ढाबा पे खाना खाएंगे वहां पे वाईफाई है. बट वाईफाई इज वेरी वेरी वल्नरेबल. देयर आर मेनी अटैक्स विच आर पॉसिबल, विच आई हैव एनलिस्टेड हियर. एविल ट्विन अटैक, जैमिंग सिग्नल, मिसकॉन्फ़िगरेशन, हनी स्पॉट, अनऑथराइज्ड एडॉक कनेक्शन अटैक एक्सेट्रा. ठीक है, बहुत इजी है वाईफाई को अटैक करना. ठीक है, इससे आपका जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे होंगे वो सारी फ्रॉस्टर के पास जा सकता है. तो इसको प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं? ऑलवेज अवॉइड द पब्लिक वाईफाई नेटवर्क. जो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या कहीं पे जो मॉल्स में जो वाईफाई है उसको यूज मत करें. पर्टिकुलरली व्हेन यू आर कैरिंग आउट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, नेवर यूज इट. ऑलवेज यूज योर मोबाइल डाटा. Some people say that if they travel abroad, then their mobile will not be working, then they need to rely only on the Wi-Fi network there. In that case, use VPN connection, because if you are using VPN connection, then it is very very difficult for the fraudsters to decrypt the information. So always the third one is always change the default credentials of your router, because I'm sure 80% of you may be कीपिंग द क्रीडेंशियल्स एज एडमिन जो कि डिफॉल्ट क्रीडेंशियल होते हैं राउटर के,
एडमिट होता है, वो सबको पता है। जब फ्रॉस्टर को क्रेडेंशियल ही मालूम है तो ही कैन इंट्रूड इनटू योर राउटर एंड कुछ भी कर सकता है वो। एंड ऑलवेज इंश्योर दैट योर राउटर इज हैविंग द लेटेस्ट प्रोटोकॉल, WAP1 2 3, इस तरह जो भी लेटेस्ट प्रोटोकॉल है उसको यूज करें, क्योंकि लेटेस्ट होगा तो दैट विल बी मोर सेफ। सो रैंसमवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज रैंसमवेयर? सो रैंसमवेयर का इफेक्ट, जो अटैक्स कहाँ कहाँ हुए, एम्स पे अटैक हुआ है रिसेंटली, अभी 2023 में एम्स पे अटैक हुआ। 15 दिन तक एम्स में सर्विसेज अफेक्ट हुई थी, एक तरह से बंद ही थी सर्विसेज। जो ओपीडी सर्विसेज है वो मैनुअल से ही चल रही थी। स्पाइस जेट पे अटैक हुआ है, ऑयल इंडिया, हल्दीराम, इंडिया बोर्स, ये सारे इंडिया से हैं। ठीक है, इंटरनेशनली तो बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े अटैक हुए हैं। ठीक है, रैंसमवेयर है क्या? तो रैंसमवेयर इज ए मालवेयर इफ इट गेट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द सर्वर। तो ये जितनी फाइल्स हैं सर्वर या कंप्यूटर में जहां पे भी आएगा, इट विल एनक्रिप्ट ऑल द सेंसिटिव फाइल्स। एनक्रिप्ट करने के बाद ये एक मैसेज थ्रो करेगा that your files have been encrypted, please contact such and such person by this mail if you want a decryption key। यानी उसने फाइल्स डिलीट नहीं की हैं, सबको एनक्रिप्ट कर दिया है, और वो वापस डीक्रिप्ट हो सकती हैं, बट उसके लिए डिक्रिप्शन की जरूरत है। तो उस डिक्रिप्शन की को देने के लिए ही विल डिमांड अ रैंसम। ठीक है, एक अमाउंट मांगेगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द रैंसमवेयर। तो ये इट इज वेरी सोफिस्टिकेटेड मालवेयर एंड देयर आर ग्रुप्स अवेलेबल। और एक तरह से अब वो ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क कर रहे हैं, टीम्स है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो ये होता कैसे? इट हैपेंस इन द फेज्ड मैनर, डिफरेंट स्टेजेस। फर्स्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन। जो मालवेयर बनाया जाएगा रैंसमवेयर का, डिफरेंट मालवेयर्स आर देयर, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जब डिस्ट्रीब्यूट होके कोई कंप्यूटर में अगर ये चला गया तो कंप्यूटर इन्फेक्ट होगा, मींस वो एक्टिव हो गया उसमें। फिर एक कंप्यूटर से, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा सारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर में गया, तो एक कंप्यूटर में जाने के बाद उसका जो लेटरल एंट्री है, यानी फिर विद इन वो नेटवर्क में पहुंच गया, तो उसको विद इन नेटवर्क ट्रेवल करना बहुत इजी है। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, तीसरे कंप्यूटर में चलते चलते वो सर्वर तक पहुंच जाएगा। सर्वर में जाएगा तो वहां पे स्टेजिंग है, वहां पे वो रुक जाएगा। तो दिस इज आल्सो नोन एज दिस टाइप ऑफ अटैक इज आल्सो नोन एज द एपीटी, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स। ठीक है, वहां पे अब वो विदाउट डिटेक्शन वो वहां पे अपना काम करेगा। वो आराम से अपनी जो फाइल्स है, वो कई दिन लगा, ऐसा नहीं एकदम से है, फाइल्स को एनक्रिप्ट करेगा। जब उसका काम पूरा हो जाएगा, फाइल सब एनक्रिप्ट हो गई हैं, उसके बाद ये मैसेज थ्रो करेगा, मैसेज डालेगा, भाई आपका जो फाइल्स है वो सब एनक्रिप्ट हो गए हैं, टू टेक ए डिक्रिप्शन की, कॉन्टैक्ट एट सच एंड सच नंबर, और ईमेल नंबर तो नहीं देंगे, दे प्रोवाइड द ईमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद फिर कम्युनिकेशन फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें निगोशिएशन होता है। कि वो कुछ दे विल डिमांड फॉर सम $1 million। ठीक है, डॉलर्स मिलेंगे, या इंडिया है तो वो लैक्स या करोड़ रुपए में, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, निगोशिएशन हो गया होगा तो डिक्रिप्शन की, जहां सेटलमेंट हो जाएगा तो डिक्रिप्शन की मिल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो उसके बाद डिक्रिप्शन की से जो फाइल्स हैं वो वापस डिक्रिप्ट होके रिस्टोर हो जाएंगी। तो लेकिन जो अब तक का एक्सपीरियंस है जो वाइडली, उसमें डिक्रिप्शन, अब सेटलमेंट हो भी जाता है तो डिक्रिप्शन की मिल भी जाती है, तो वो काफी केसेस में वर्क नहीं करती है, यानी पैसा भी गया और आपका डाटा भी चला गया है। तो अटैक वेक्टर्स क्या है? व्हाट आर अटैक वेक्टर? अटैक वेक्टर मींस भाई कैसे होता है, भाई किस चैनल से या किस वे से रैंसमवेयर आ सकता है सिस्टम में। सो इट कैन कम बाय सोशल इंजीनियरिंग और अनसेफ वेब ब्राउजिंग,
ईमेल कैंपेन्स, फिशिंग स्कैम्स, इन्फेक्टेड रिमूवेबल मीडिया एटसेट्रा, कुछ भी चैनल यूज करके उसको सिस्टम में आना है। तो इसके नुकसान क्या हैं? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रैंसमवेयर? लॉस ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉयज का डाउन टाइम, जैसे एम्स में हुआ तो कितने दिन तक जो एम्प्लॉयज है वो ना खाली बैठे, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है जब नेटवर्क ही नहीं चलेगा तो एम्प्लॉयज है वो खाली बैठेंगे। इन्वेस्टिगेशन का कॉस्ट आएगा, और डाटा लीक एंड कंप्लायंस इश्यूज। क्या अभी जो डाटा के रिगार्डिंग डीपीडीपी एक्ट आ चुका है इंडिया में, ठीक है, डाटा लीक अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से होता है तो बहुत करोड़ ऑफ मोर देन करोड़ रुपीज है उसका वो फाइन है, बहुत अच्छा खासा फाइन है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो वो कंप्लायंस इश्यूज रेज हो जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो रेपुटेशन एंड लॉस ऑफ बिजनेस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको रिवैम्प करना पड़ेगा। तो इसको हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? thou shall back up again, thou shall back up once more। 3 बार दिया है। क्यों दिया है? ये 3 बार बोल रहा हूं, ठीक है। thou shall back up again, thou shall back up once more, because it is due to the 3-to-1 बैकअप स्ट्रेटेजी। ठीक है, जो बैकअप है यही लास्ट उसका रिसोर्ट है जो मिटिगेट करने का रैंसमवेयर। एम्स में भी यही किया गया था, उनके पास बैकअप था प्रॉपर, तो वो सब रिट्रीव कर लिया था और वापस जो एम्स है चलने लग गया था। 3-to-1 बैकअप स्ट्रेटेजी मीन्स तीन बैकअप की कॉपीज बनाइए, 2 एक ही तरह का हो और थर्ड वन डिफरेंट। फॉर एग्जांपल भी एक हार्ड डिस्क पे बैकअप ले लिया और 2 बैकअप टेप के ऊपर ले लिए, ठीक है। और एक बैकअप जो टेप के ऊपर बैकअप लिया है, एक टेप का बैकअप आप किसी ऑफ साइड लोकेशन पे भेज दीजिए कहीं और, जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में पहले हुआ करता था हम बैंक के लॉकर में रखा करते थे वीकली बैकअप, वीकली लेके एक टेप बैंक के लॉकर में जाके रख देते थे। So now coming to the DDoS attack. So DDoS attack जैसे पहले ही डिस्कस किया है, ट्रैफिक will get generated and it will overwhelm the target। तो टारगेट को डाउन कर देगा। तो वो कैसे डाउन कैसे करेगा? इसमें ये डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं। बॉट मास्टर कौन है? जो फ्रॉस्टर है, ही इज द बॉट मास्टर। बॉट नेट क्रिएट करेगा वो, यानी जो फ्रॉस्टर का पहला काम है बॉट नेट। बॉट नेट क्या होता है? बॉट मींस रोबोट, नेटवर्क ऑफ रोबोट्स इज द बॉट नेट। तो बॉट नेट एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा जो इंस्टॉल हो सकता है। हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हमारे कई सारे लोगों के जो कंप्यूटर में ऑलरेडी बॉट नेट हो, मीन्स हमारे कंप्यूटर बॉटनेट इन्फेक्टेड हो, तो ये बॉटनेट जहां डिफरेंट कंप्यूटर्स में जो भी वनरेबल होंगे वहां पे इंस्टॉल होगा। उसकी डिटेल सारी इस बॉट मास्टर के पास है। तो वो एक कमांड एंड कंट्रोल सर्वर क्रिएट करता है, जिसमें कमांड एंड कंट्रोल सर्वर में सारा पता रहता है भी कौन कौन से सिस्टम पे कौन सा बॉटनेट पड़ा हुआ है। उसके बाद ये टारगेट चूज करते हैं, मींस जो विक्टिम है, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस विक्टिम के ऊपर इन सभी कंप्यूटर से ट्रैफिक जनरेट होगा। यानी आप देखिए भी एक ही विक्टिम है और थाउजेंड ऑफ लोकेशन पे ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, ठीक है। इतना सारा ट्रैफिक जनरेट होगा तो जो विक्टिम के जो सर्विसेज हैं वो डाउन हो जाएंगी। जो ऑथोराइज्ड पर्सन है वो इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इससे मोटिवेशन क्या होती है? अगेन एक्सटॉर्शन है या रैंसम डिमांड्स कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है एक दूसरे के असेट्स पे वो करवाती हैं, खुद भी पैसा दे के करवाती हैं। इट मे बी ड्यू टू एक्टिविज्म, रिवेंज और ए पर्सनल ग्रज। तो इम्पैक्ट क्या होगा डीडोस का? सर्विस डिसरप्शन एंड डाउन टाइम, ठीक है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसकी रेपुटेशन डाउन होती है। It can resulting into the financial losses, reputational damage, customer dissatisfaction and increased security risk। ये सब नुकसान है उससे। तो इसको कैसे कर सकते हैं? ट्रैफिक, ये थोड़ा टेक्निकल ज्यादा हो जाएगा, अभी टाइम भी कम है काफी। तो
इसमें जो मेन है अभी आप नेटवर्क है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, उसके नेटवर्क को मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये 24 आवर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जहां से भी एबनॉर्मल ट्रैफिक जनरेट हो रहा है तो उसमें वो स्टेप्स लेने होते हैं। अभी ज्यादा नहीं बता पाऊंगा इस वक्त। Best practices for DDoS prevention: conduct a risk assessment, understand your network vulnerability. आपके नेटवर्क की हमेशा vulnerability assessment आप करते रहें। Implement a layer defense system. Layer defense system means भाई एक डिफेंस सिस्टम नहीं है, डिफरेंट लेयर्स में है। लेयर मीन्स भी डिफरेंट लेवल्स पे है। अगर एक जगह ब्रेक हो गया तो उसके बाद दूसरी लेयर है डिफेंड करने के लिए, फिर तीसरी लेयर है, इस तरह से होना चाहिए। रेगुलरली अपडेट एंड पैच सॉफ्टवेयर इन सिस्टम। ठीक है, ये तो 4 दिन में हमने कई बार पढ़ लिया होगा भाई। जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है, कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ भी डिवाइसेस है, फर्मवेयर है, उसके अपडेट्स है इमीडिएटली अप्लाई करने हैं जैसे ही रिलीज होते हैं। मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक एंड लुक फॉर एनोमलीज, हैव ए इंसिडेंट रिस्पांस प्लान इन प्लेस। जैसे पहले भी डिस्कस किया था भाई, ऐसा नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए तो एकदम वो हैरान रह जाए भी हाँ ये हो क्या गया, डीडोस अटैक हो गया है हमारे ऊपर। ऐसा नहीं हो, मान के चलेंगे भी होगा, ठीक है। और जब होगा तब आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? अगर आप पहले से ही इसके लिए तैयार हैं तो यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू रिस्पॉन्ड टू इट। लेकिन अगर आपने कभी माना ही नहीं है भी ऐसा हो सकता है तो फिर तो एकदम से आप डाउन हो जाएंगे। So network security ultimately everything comes under the network security. For that you use strong passwords, क्योंकि जो पासवर्ड ब्रेक करते हैं वीक पासवर्ड है उसको ब्रेक करने में बहुत कम टाइम लगता है, लेस देन 1 सेकेंड। अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, एनी पासवर्ड कैन बी ब्रोकन। ठीक है, कोई भी पासवर्ड है, हर पासवर्ड ब्रेक हो सकता है। ऐसा कोई भी पासवर्ड नहीं है जो ब्रेक नहीं हो सकता, बट इट इज द टाइम विच कैन बी टेकन in breaking the password. जो weak password है that can be broken in less than 1 second, and very strong very good password can be broken in 10 years. तो 10 साल का टाइम किसी के पास नहीं है जो लगाएगा उसके लिए। Always update firmware and software. Segment the network. Segment network means अगर जो आपके पब्लिक आ रही है, जो इंटरनेट से आ रही है, उसके लिए नेटवर्क अलग होना चाहिए। इंटरनल वर्किंग के लिए नेटवर्क अलग होना चाहिए। और जैसे वाईफाई है, वाईफाई बिकॉज इट इज वेरी वनरेबल, तो उसके लिए नेटवर्क अलग से होना चाहिए। एनेबल फायरवॉल, फायरवॉल तो मस्ट है कहीं भी, उसके बिना नाउ वी कैन नॉट इमेजिन द नेटवर्क सिक्योरिटी। यूज नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जो नेटवर्क को ऑटोमेटिकली मॉनिटर करते हैं, और अगर कुछ इंट्रूजन है दे विल टेल अबाउट इट। सो सिक्योर वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क है उसको अलग से रखें, उसको बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत है, बिकॉज वायरलेस वाईफाई सिस्टम्स आर हाईली वनरेबल। इंप्लीमेंट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, रेगुलरली बैकअप डाटा। ठीक है, बैकअप अभी डिस्कस कर चुके हैं। एजुकेट द यूजर्स को एजुकेट करें, ट्रेनिंग दें। मॉनिटर एंड लॉग द नेटवर्क एक्टिविटी। आपके नेटवर्क की जितनी एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करना है, और उसको एवरी एक्टिविटी को लॉग भी करना है भी कौन सा ट्रैफिक कहां से आया, कहां से गया। फिर आ जाता है email and internet security. Email में जो I'm sorry but I have to interrupt you here. Sir, we are running short of time and we have to wind up this session. And also I have received 2 questions on YouTube, sir. If you allow, I may ask. Yeah, you may. We can take that. Yes, sir. So I've got these 2 questions from Miss Namita Sahu. And the first question is, what is cryptocurrency? Why is it used? And the second question is, can mobile phones be attacked by viruses? In this case, is there any software to protect the mobile from different viruses? So what is cryptocurrency? Cryptocurrency is a new type of it is we can say it is a digital currency. एक क्रिप्टो करेंसी में जो कंप्यूटिंग पावर है उसको यूज होके क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की जाती है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके,
ठीक है, तो इट कैन बी, इसको परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जस्ट लाइक वो शेयर्स हैं, ऐसे ही ये होता है। तो इट इज द वर्चुअल करेंसी, यानी कुछ भी कागज में नहीं है, पेपर में नहीं है। एंड व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन, मोबाइल पे वायरस जी, आ सकता है? कैन मोबाइल फोन्स बी अटैक्ड बाय वायरसेस, और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है सर जो प्रोटेक्ट कर सकता है मोबाइल फोन्स को फ्रॉम देख, वायरसेस? यस, मोबाइल मोबाइल सिंपली मीन्स कंप्यूटर, मोबाइल भी कंप्यूटर ही है। जो जी। चीज एप्लीकेबल है किसी भी डेस्कटॉप के लिए, दोज आर एप्लीकेबल फॉर मोबाइल आल्सो। ठीक है, देयर आर गुड एंटीवायरसेस फॉर डेस्कटॉप, सिमिलरली एंटीवायरस आर आल्सो देयर फॉर मोबाइल फोन्स, और हमेशा मोबाइल फोन में एंटीवायरस लगा के रखना चाहिए। जी सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे से हमें डिटेल में जो आज की थीम थी, डिफेंडिंग अगेंस्ट डिजिटल थ्रेट्स, रिकग्नाइजिंग एंड अवॉइडिंग साइबर अटैक्स, इसके बारे में बताया। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किए कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ वी नीड टू स्टे कॉशियस। आपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए। अनफॉर्चुनेटली सर, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, अदरवाइज टॉपिक ऐसा है कि इस पर हम और भी ज़्यादा बात कर सकते हैं, और जितनी इन्फॉर्मेशन हो, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस टू स्टे अपडेटेड एंड इन्फॉर्म्ड. But sir, for your contribution, for your time, thank you so much. Thank you. And now students and viewers, it was the last day, day 5 of the training session, and now time for me to wrap up this training session here. But the things are not completed as yet, because I mentioned in the beginning of the session that today you can definitely attempt the quiz. The link will be highlighted, and of course you have a chance to score more than 70% and secure a participation certificate. So how all we can do that? Now let me tell you the procedure, and let's go towards the website. So as I've been mentioning of late, that you have to go to the CIET website, which is ciet.ncert.gov.in. Here we have this activities section. Click on the same, scroll down, you will find this option of workshop and training. So click on the same and you will land up on a new page. On this page, go to the section of current activity, and this is the current activity, online training on cyber hygiene, which is going on. When you click on the same, the another web page opens up, and on this web page you will get all the information regarding online training on cyber hygiene. This is the schedule of the themes that we covered so far on all 5 days, and these are the objectives of the training session. Though the training session has culminated today, this particular, but the videos will be there on YouTube where you were watching us live, and you can always go through them and you can actually enhance your knowledge and understanding of the same. Here is a detailed program schedule with the resource persons, what all we learnt in all those 5 days. And now the most important part of attempting the quiz. Well, if you have carefully watched all the videos of all the training sessions, then definitely you are eligible to participate in the quiz, because now you have the necessary knowledge. So for participating, first of all you have to register yourself. You can click this link and do the same, or you can scan this QR code. And then of course you have watched all the training sessions. This is the post session quiz link, and now it is activated, which means on clicking the link you can actually attempt the quiz. If you score more than 70%, you will be given a participation certificate, but you have to allow us some time. You can download the certificate from the website itself. And whatever you have learned in the training session, if you have any suggestions, any feedback that you want to share with us so that we can improve upon the training sessions, you can click on this link and you can submit your feedback to us, or you can scan this QR code. Remember, it is very important to basically go through all the sessions nicely, because cyber hygiene was the umbrella concept that we took up during this week for the session. We covered 5 themes under it. And if at all there is something else that you want to share about your experiences, anything that you noticed during the training session, you can always write to us on training.helpdesk@ciet.nic.in. So please go through this website of our CIET, because this training session was organized by CIET. You can go to this web page and you will get all the information here. And I have already mentioned that for your use in the future, you can always go back to these sessions and you will find all these 5 themes that we covered. The videos will be there on YouTube.
And now time for me to wrap up the session over here, but let me tell you, in a short while from now you can watch our next live and interactive program Sahyog. The topic that we are going to discuss in Sahyog will be the power of boosting our mind and body. And now another important announcement for all of you. CIET NCERT is happy to announce the All India Children's Educational E-Content Competition for this year. So if you are a teacher, educator, student or independent educational e-content creator, we invite you to send in your best e-content for the competition. For more details and the registration form, you can visit the activity section of our official website www.ciet.ncert.gov.in, or you can scan the QR code on the screen. The last date for sending your entry is 10th of January 2024. हमें आप सभी को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि CIET NCERT इस वर्ष के लिए अखिल भारतीय बच्चों की शैक्षिक ई कंटेंट प्रतियोगिता की घोषणा कर चुका है। तो यदि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक प्रशिक्षक हैं, छात्र या स्वतंत्र शैक्षिक ई कंटेंट निर्माता हैं, तो आप प्रतियोगिता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ ई कंटेंट भेजने के लिए आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी एवं प्रवेश फॉर्म के लिए कृपया करके CIET की वेबसाइट देखें अथवा स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके भी आप वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख रहेगी 10 जनवरी 2024। और इसी के साथ ही इट्स टाइम फॉर मी टू टेक लीव ऑफ यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन, बट प्लीज स्टे ट्यून फॉर वॉचिंग आवर नेक्स्ट लाइव एंड इंटरैक्टिव सेशन सहयोग। सो दिस इज मी हरप्रीत कौर टेकिंग लीव ऑफ यू। नमस्कार।